Good evening, everybody, and welcome to this lovely evening, everyone. Okay, so we are continuing with the chapter called as Ionic Equilibrium, and hope so. What are the topic we have discussed till date? You have gone through it, or you are thorough with this one. So, while taking a short recap of the topic, even additionally, I would like to listen from your side. Is there any doubt difficult to anyone amongst you regarding the Ionic equilibrium? So I will have the recap, and in between we can have the question answers if you have any difficult doubt. Then we'll continue with the next topic or next part of this chapter, Ionic equilibrium. As we have seen, this chapter is a continuation of chemical equilibrium right from 11th standard, and we know it very well. Ions plays very important role in many of the biological processes, many of the pharma industry, many of the food industry, and many more. So basically, first we have seen there are substances, or substances can be classified into two categories. That is electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes are the substances which, when put into the water, produces cations and anions, produces ions, and these are called, as you can say, electrolytes. Non-electrolytes are the substances which do not produce cations and anions in water or when they put in an aqueous solution. These are called non-electrolytes. Electrolytes comprises of classified into two categories, that is strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes dissociate completely, whereas weak electrolyte dissociate. That is also what we have seen. So ये भी हमने उसके अंदर discuss कर दिया. Furthermore, we have seen that strong electrolyte comprises of strong acid, strong base, and salt, whereas weak electrolyte comprises of weak acid and weak base. So this is what we have, a general classification of all these substances. In last lecture, what we have seen, being here in the chapter electrolytes, we are concerned with acid, base, and salt. We must define, have to be called as acid, these substances have to be called as base. So there are different scientists try to define acid and base conceptually. As far as examples are concerned, we all know the examples of acid, base, and salt, but we need to know on what basis this acid base is defined. So first scientist is Arrhenius, who tried to define the acid and base. According to Arrhenius, acid is the substance which has the H plus ions, and it produces H plus ions in aqueous solution. Be clear, acid is the substance which has the hydrogen and it produces H plus ions in aqueous solution. Whereas base is the substance which has hydroxyl group and it produces hydroxyl ions when put into the water. So that is the definition of acid and base according to Arrhenius. Secondly, we have seen acid and base according to Lowry-Bronsted theory. These are the two different scientists who put for the same theory almost at a similar time. And so that's why it's combined. Lowry and Bronsted, they are two different scientists. According to them, acid is the substance which donates a proton and base is the substance which accepts a proton. So the substance which donates a proton is called as an acid, and the substance which accepts a proton is called as a base. Also, we have seen conjugate acid base pair within that. Furthermore, we are going for the next third theory, called as you can say Lewis acid base theory. Lewis acid base theory is very generalized theory that talks in the form of electrons, that defines acid and base in terms of electrons or electron exchange. According to Lewis theory, the substance which accepts a lone pair of electron is called as an acid, and the substance which donates a lone pair of electron is called as a base. The substance which donates a lone pair of electron is called as a base, and the substance which accepts lone pair of electron is called as an acid. So that is what we can say we have here. So these are the three definitions what we have seen regarding acid base and acid base. Exam में आपको clear cut question पूछा जाता है. Define acid and base according to Arrhenius theory. Define acid and base according to Lowry-Bronsted theory. Define acid and base according to Lewis theory. So you have to be very specific while defining this acid and base. And three of the theories are used as per the requirement. So अभी तीनों में से कौन सा theory right है? ये question यहाँ पे आपके दिमाग में जरूर create होगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा. There are many concepts which can be explained on the basis of Arrhenius theory. There are some of the concepts which can be explained on the basis of Lewis theory. There are some of the concepts which can be explained on the basis of Lowry-Bronsted theory. So every theory has its applications here in this one. Or even though definitions are different, the properties of acid do not change. So what are the properties of acid? There are the properties of acid. What are the properties of base? There are the properties of base. So वो change नहीं होते. So that's why keep it in mind.
Though conceptually definition of acid base is, but it do not changes for this one. That is also what we are seeing here in this chapter. Now, next, that was the recap what we are seeing till date here in this chapter. Now let's move ahead with next, that is called amphoteric nature of water. So amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water. I mean, what is meant by this amphoteric nature of water? Amphoteric, but it has the properties of acid as well as it has the properties of base. Let's we have one example, and then furthermore we can go ahead. We can have two examples. Number one, HCl plus H2O gives you. This is the reversible reaction, no doubt at all. So this is the proton which is donated to this water. So here it becomes H3O plus and Cl minus is produced. This is the first example. Here's the second example. That is H2O plus NH3. Here hydrogen is donated by water to form. This is again reversible reaction to form NH4 plus plus OH minus. So this is what we get here. So just keep it in mind, these two examples are very clear and simple examples. This is HCl which reacts with water, and that time this H3O plus is formed and Cl minus is released. And here water reacts with ammonia, NH4 plus and OH minus. According to Lowry-Bronsted theory, हम अच्छी तरह जानते हैं इसमें this substance has donated proton to this one, and proton donor must be called as an acid. So this is called as acid and this is called as a base. No doubt at all, because this is the substance which accepts proton. That's why it is base. This is the substance which donates a proton. That's why it's acid. इस example के अंदर आते हैं. इस example में this is the substance which donated proton. So that's why this must become an acid. And this has accepted proton. This must become a base. अब देखिए इस example में is acting as a base, और इस example में water is acting as an acid. So water base की तरह भी act करता है और water acid की तरह भी act करता है. Water दोनों तरीके से act करता है. So अगर water के साथ HCl और कोई acid रखा जाता है तो it will act as a base, और water के साथ कोई base रखा जाता है तो it will act as an acid. So water has both of the capacities. It can act as an acid, it can act as a base. And this property is nothing but the amphoteric nature of water. So water is amphoteric in nature. Water acts as acid as well as water can be acts as a base. And this is nothing but what we can say amphoteric nature of water. So there are some of the substances which acts as acid as well as which acts as a base. So this is one of the example of this one. And the substances which has this property, which acts like acid, which acts like a base, are called as, you can say, amphoteric nature substances or amphoteric substances. Remember this? So though we define acid differently, we define base differently, there are some substances which shows the properties of acid as well as base. उनके सामने अगर एसिड आता है तो बेस की तरह एक्ट करते हैं, उनके सामने बेस आता है तो एसिड की तरह एक्ट करते हैं. This nature is called the amphoteric nature of substances. So substances can be classified as acid, base, and amphoteric nature of substances. Clear with this? So this is also one of the important thing, and this is an example for that one. So here water acts as a base, here water acts as an acid. So that's what water is amphoteric in nature. There are many substances which acts as amphoteric nature because they sometimes act as acid, they sometimes act as a base. So this is the classification of substances as acid, base, and having amphoteric nature like water. So that's all what we can have. Clear? So let's go to the next topic now here. That is what we have to discuss, the dissociation of acid and base. Already आप जानते हो, but वो करना पड़ेगा था आगे टॉपिक के लिए जाने के लिए, आगे टॉपिक को जाने के लिए. Dissociation of acid and base या फिर electrolytes. Dissociation of acid and base. Okay, या dissociation of substances. अभी देखिए, सबसे पहला लेते हैं हम लोग. We can have HCl. HCl dissociate to produce H plus aqueous plus Cl minus aqueous. Aqueous लिखना नहीं भूलना. दूसरा, we can have NaOH. NaOH dissociated to produce Na plus plus OH minus. Again here, sorry, aqueous plus OH minus here again aqueous. So this is the dissociation. तो HCl होगा तो इस तरीके से dissociate होता है. NaOH होगा तो इस तरीके से dissociate होता है. And both are nothing but the strong electrolyte. These are nothing but the strong electrolyte, strong acid, and this is, you can say, strong base. Both are called as strong electrolytes. Whereas we can have some another example. First is we can have
CH3COOH that dissociate to produce CH3CO minus aqueous plus H plus. This is nothing but aqueous. And another is you can say NH4OH dissociate to produce NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. That's what happens here. So this is the first example, which is called as a weak acid, and this is called as a weak base, and both are called as a weak electrolytes. So these are the examples, and we have to keep it in mind very well. So strong electrolyte dissociates completely. Already we have seen the definition. Strong electrolyte comprises of strong acid, strong base. I have on just for the sake of example, we have given this HCl animals. There are many examples we can have here. So this is strong acid, which dissociates like this one. Acid produces H plus ions and remaining Cl minus ions. This reaction has to be chemically balanced. Total number of atoms on the left hand side must be equal to total number of atoms on the right hand side. Aqueous has to be written to the right suffix. कभी कभी कुछ दूसरे इक्वेशन के अंदर अगर मैं लिखना भी भूल जाता हूँ तो अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जनरली मतलब RNA तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है कि RNA डिफाइन एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ओनली. मतलब एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस H plus ions in aqueous solution. पानी में ही वो H plus पैदा कर सकता है. And that's why it is called as acid. ये उसका डिसएडवांटेज भी है. RNA ने एसिड बेस को एक्वियस के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है. So that is also important. This is base which dissociate Na plus and OH minus ions, and both are called as a strong electrolyte because they dissociate completely. Weak electrolyte comprises of weak acid and weak base. Even salt भी strong electrolyte के केस में आ जाते हैं. Salt भी strong electrolyte के केस में आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, salt के लिए totally अलग से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर. Weak acid dissociate like this one, and weak base dissociate like this one. Acid must produce H plus ions, and base must produce OH minus ions. So this is the dissociation what happens here. Clear with this? अभी देखिएगा. According to RNAs, acid produces H plus ions and base produces OH minus ions. So generally कोई भी एसिड होगा, अभी ये एक एसिड है आपको मिलता है और यहाँ पे एक एसिड मिलता है. दोनों एसिड्स के लिए एक आपको मिलता है जनरल रिप्रेजेंटेशन. जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर एसिड की अगर बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट Ha. ओके, सो Ha इज एसिड. एसिड जब डिसोसिएट होता है तो इट प्रोड्यूसेस H plus plus A minus, and this is nothing but the aqueous. आप अच्छी तरह जानते हैं. So this is what we can say. Ha is a general representation of acid, whereas BOH is a general representation of base, which produces B plus plus OH minus. This is aqueous. This is aqueous. So, getting it? Again, there are many examples of acid. So all acids are represented by this HA. There are many examples of base. Base produces being OH minus, they are represented as BOH. And say example of salt. Salt you can say NaCl produces Na plus plus Cl minus. This is the salt. तो अब देखिए ना, ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो H और OH निकल जाएगा, Cl और Na बचेगा. So इसी तरीके से ना यहाँ पे अगर H और OH निकल जाता है तो रिमेनिंग क्या होगा? Ba. So Ba is nothing but the salt. Ba is nothing but the salt which dissociate to produce B plus plus A minus. ये पहले भी minus था और B यहाँ पे already plus था. So this is nothing but the general representation of acid. This is general representation of base, and this is general representation of salt. So आगे पूरे चैप्टर में हम यही टॉपिक यूज करने वाले हैं, यही चीज यूज करने वाले हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन. बीइंग देयर आर मेनी एसिड्स, हम कौन सा हर टाइप पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेंगे बिकॉज़ वी हैव टू जनरलाइज द थियरी. हमें हर एग्जांपल के साथ डिस्कस नहीं करना है, हमें थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ता है. तो एवरी एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय Ha. तो इस चैप्टर में आगे दिया आपको Ha दिखाया जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एसिड. BOH दिखाई देगा, it representing the base, and Ba दिखाई देगा, it represent the salt. This is very important thing. Initially, what we need to remember. It's very easy. Or this is according to RNA theory, because RNA theory के हिसाब से acid is the substance which produces H plus ions. So this is where you can get H plus ions. So according to RNA theory, acid produces H plus ions, base produces OH minus ions, and salt produces cations and anions. That is what we can see here. So concept what we get here. So आगे there are many derivations, the simple derivations what we are going to derive, but we are going to derive on this basis only. ये particular examples हम लोग बहुत कम बार यूज करेंगे. इसके अंदर भी मैंने बताया कि आपको किसी भी हालत में HCl, NaOH, acetic acid, NH4OH, ये they are representing their respective, मतलब HCl is representing a strong acid, NaOH representing strong base, acetic acid is representing weak acid, and NH4OH is representing weak base. There are many weak bases. Amongst that, this is one of them. There are many weak acids among them.
तो ये है ये जनरल टर्म्स है और ये उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स है. सो कई सारे एसिड बेसिस है, वो सारा ध्यान में रखना मुश्किल बात है, इसलिए उसे जनरलाइज किया जाता है और कोई एक एग्जांपल इसमें से आप याद रखें. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस लिस्ट. क्लियर विद दिस? सो this is the way how the dissociation of acid and base occurs. Even I have written up for the salt. Salt हमें बाद में देखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पर भी दिया, ये बाद में आएगा क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं acid plus base produces salt and water. Salt and water ये रिएक्शन उसी तरीके से आता है, तो वैसे लिख भी सकते हैं हम लोग. समझ रहे सब लोग? So this is the dissociation of acid and base. Now for the dissociation constant of acid and base. So let's move ahead with this one. इसके साथ चलता हूँ मैं, इसे हटा देता हूँ. अभी हमें ये पर्टिकुलर एग्जांपल देखने ही नहीं है, हमें अभी जनरल एग्जांपल के साथ ही समझना है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स और मैक्सिमम चीजों को. ठीक है? सो dissociation constant of acid, dissociation constant of acid. ओके, सो पहला पार्ट देखेंगे हम लोग, dissociation constant of acid. हीडिंग थोड़ा सा बदलता है, पहला सिर्फ dissociation of acid and base था, अभी dissociation constant of acid and base which is denoted by Ka, which is denoted by Ka, K और उसके राइट सफिक्स में A. So K for property constant, A for acid. So you can say this is dissociation constant of acid. Now we know very well acid is generally represented as Ha. Ha dissociate to produce H plus A minus. Okay, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है हम अच्छी तरह जानते हैं. दिस इज acid. Now applying law of mass action, applying law of mass action. अभी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है शायद आपको याद आता होगा, नहीं आई डोंट नो, बट जैसे मैंने बताया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम इज अ चैप्टर व्हिच हैज द लिंक विद 11th स्टैंडर्ड चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन नाम का लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंटिस्ट के दिमाग में यह सवाल था किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, which are the factors on which this rate of reaction depends. साइंटिस्ट को समझ रहा है कि सपोज रिएक्शन इज बिटवीन दिस टू सब्सटेंसेस और एनी ऑफ द सब्सटेंसेस, ये दो सब्सटेंसेस के बीच में है, तो रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो साइंटिस्ट फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी सब्सटेंस. शायद आपको 11th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम याद आता होगा, हमने देखा था a plus b produces c plus d ऐसा रिएक्शन हमने देखा था, और ये देखा था कि a reacts with b reacts with c and produces c plus d. That was the reversible reaction. That was the reversible reaction. So a का b के साथ रिएक्ट होने का रेट अलग है, b का a के साथ रिएक्ट होने का रेट अलग है, दोनों रिएक्टों के रिएक्शन का रेट अलग होता है. So reacting rate of a depends upon active mass of a, reacting rate of b depends upon active mass of b, और रिएक्शन का रेट दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. ऐसा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा. लॉ ऑफ मास एक्शन वही कहता है. So उसी हिसाब से हमने ये देखा था कि applying law of mass action K is equal to concentration of C into concentration of B upon concentration of A into concentration of B. ये ऐसा इक्वेशन में देखा था. शायद आपको ये याद आ रहा है, इस टाइप का इक्वेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में डिस्कस किया. हमारा जो भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अंदर ये जो एक्टिव मास की बात आती है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट. किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. तो ये पढ़ने का तरीका है K is equal to concentration of C into concentration of B upon concentration of A into concentration of B. इस तरीके का इक्वेशन मिलता है. So ये इक्वेशन ये कहता है कि इस रिएक्शन को अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट दिखते हैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाता है. सेम फिनोमेना हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा K is equal to applying law of mass action, तभी जाके तो ये मिलता है. तो ये वो एग्जांपल है, अभी ये HA का एग्जांपल है, बस वही है. सो इस रिएक्शन में these are the product, these are the reactant. तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट तो ये है. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA रिएक्टेंट, ये यहाँ पे आ जाता है. सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी गेट हियर. अब देखिए दिस इज द इक्वेशन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन. हमने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके इस तरीके का इक्वेशन ऑब्टेन किया था. इस रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद वी गेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा मिलता है. तो यहाँ पर भी वही किया हमने, यहाँ पर भी वही किया. सो कीप इन माइंड दिस इज रेफर्स टू 11th स्टैंडर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. सो वी गॉट दिस वन, ये हम लोगों को मिल जाता है. ठीक है. अभी बीइंग दिस इज ऑफ एसिड इट इज रिटन एज K, ऐसा हम लोगों को मिल जाता है.
So we got this equation number 1. So this K is nothing but the dissociation constant of acid, whereas this K is known as dissociation constant of acid. ये हम लोगों को मिल जाता है. तो K is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. We got this one. ये हम लोग इसके हिसाब से इसके अंदर ये मिल जाता है. Clear with this? So that is what we can say dissociation constant of acid and all. Clear? कुछ बुक में ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग भी मिलता है. अभी इसे हटा देता हूं मैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो. ठीक है. कुछ रिएक्शन में ये रिएक्शन ऐसा भी मिलता है, that is HA, that is acid put into the water, H2O, gives you concentration of H plus, this is aqueous, and concentration of A minus, this is aqueous. Being this is the water, acid is put into the water, that's why here aqueous. अब यहाँ पे water लिखने की जरूरत नहीं है, water plus H2O लिखने की जरूरत नहीं है. रीजन बेहिंड दैट यहाँ पे aqueous लिखा है हमने, मतलब acid is put into the water, H plus aqueous, A minus aqueous आपको मिल जाता है. इसे भी हम लोग लॉ ऑफ मास में अप्लाई कर सकते हैं. Applying law of mass action. Applying law of mass action. तो क्या मिलेगा हम लोग देखिए, K is equal to, this is the product of concentration of resultant. So here concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA into concentration of H2O. H2 ऐसा है. और ये H2 इस तरफ कैरी करेंगे हम लोग, तो ये आता है K into concentration of H2O. Concentration of H2O. Okay. Is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो this gives to Ka is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. This is that. तो ये दोनों सिमिलर है. कुछ बुक के अंदर आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, कुछ बुक के अंदर इस टाइप का पैटर्न मिलेगा. It doesn't make any difference because it is considered that acid is the substance which produces H plus ions in aqueous solution according to RNA. So dissociation constant of acid and base is also calculated by using this concept, same concept. So you say, either you can write here in this way, either you can write here in this way. दोनों तरीके राइट है, कौन सा भी गलत नहीं है. यहाँ पर ऑलरेडी अज्यूम्ड है और यहाँ पे वो क्लियर कट लिख के वो कंसिडर किया जाता है. दोनों सेम ही आते हैं. K is nothing but the dissociation constant of acid. Concentration of H plus into A minus upon HA. Here भी वही है. K is equal to concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA, and this is by applying law of mass action. किसी भी इक्वेशन को रिएक्शन को लॉ ऑफ मास में अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पर न्यूमरेटर पे और रिएक्टेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में गिना जाता है. दिस इज अ सिंपल वे हाउ वी राइट दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. क्लियर विद दिस? इसके अपोजिट में क्या आएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. तो विल बी हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट of base, and this is nothing but the Kb. This is constant of base. ठीक है. अभी बेस के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन आता है? बेस इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज BOH. BOH dissociate to produce B plus aqueous plus OH minus aqueous. इस तरीके से आएगा. Got it? Again, इसे भी applying law of mass action. Applying law of mass action. Again, applying law of mass action. क्या मिलेगा फिर वापस यहाँ पे? K is equal to ये concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of B, और here it must be Kb. ये equation आ जाता है. This is Kb. Kb is called as dissociation constant of base. Kb is called as dissociation constant of base. तो ये हम लोग मिल जाता है. Kb. यहाँ पे आए K. Correct देखिए बस इक्वेशन है. BOH general representation for base, HA general representation of acid. Accordingly, we can derive this equation. This is for Kb. This is for Ka. Ka is dissociation constant of acid. Kb is dissociation constant of base. Okay. Base को भी हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. तो वापस यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉर्मेट BOH plus H2O gives you B plus aqueous plus OH minus aqueous. ऐसा आ जाता है. So यहाँ पर भी applying law of mass action, क्या मिलेगा फिर? देखो K is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of BOH into concentration of H2O. H2O इस तरफ कैरी करेंगे तो K into concentration of H2O is equal to concentration of B plus
into concentration of OH minus, concentration of OH minus upon concentration of V. इसके अंदर दोनों के लिए भी वापस एक कांस्टेंट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड Kb, which is nothing but concentration of V plus into concentration of OH minus upon concentration of VOH. So this is what we can say Kb, dissociation constant of base. This is called a dissociation constant of base. So we have seen both of the things, dissociation constant of acid and dissociation constant of base. Acid is denoted as Ka or denoted as Kb. तो आप देखिए ये पहला वाला जो ये फॉर्मेट लिखो या दूसरा फॉर्मेट लिखो, इट्स कंप्लीटली सिमिलर. मैंने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों तरीके सही हैं. कुछ बुक के अंदर आपको फर्स्ट तरीका मिलता है, कुछ बुक के अंदर आपको सेकंड तरीका मिलता है, दोनों भी राइट है. यहाँ पे ये अज्यूम्ड है बिकॉज़ एज पर द डेफिनेशन एसिड और बेस प्रोड्यूसेस H+ और OH- आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन दैट इज इन वाटर. यहाँ पे हमने वाटर एक्चुअली इन्वॉल्व किया है और फिर उसको वापस कांस्टेंट में कन्वर्जन किया लाइक दिस K और K. यहाँ पे सिर्फ K लिया, यहाँ पे उसको K में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज़ दिस K विद वाटर है, इसीलिए. समझ रहे आप? सो वी नीड दिस इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है Ka और Kb या फिर अगर ये Ka और Kb दोनों सेम है, नो डाउट. ये इक्वेशन हम लोगों को चाहिए. दिस कांस्टेंट ऑफ बेस एंड दिस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. और इन्हीं को लेके हम आगे जाएंगे. तो आगे जाके एक टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि Ka एंड Kb और उसका फार्मूला, बिकॉज़ दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ एसिड एंड base. Clear with this? So hope everyone got this, what we are seeing here in this one. Now furthermore we have to go ahead for Ostwald dilution law. Let's move to Ostwald dilution law. Ostwald dilution law. Okay, Ostwald dilution. Ostwald is the name of scientist. चले जाएंगे तो OSTWALDS, Ostwald. But हम उसके अंदर का जो T है वो silent रखते हैं. That's why we can say it's a Ostwald dilution law. Is the name of scientist, and he has given the expression for the dissociation constant of acid and base and the relation between degree of dissociation. So ये दोनों के बीच का relation ये देता है, that is Ostwald dilution law. So Ostwald dilution law gives the relation between dissociation constant of acid or dissociation constant of base and its degree of dissociation, that is alpha. उसको जाने के लिए अल्फा का फॉर्मूला देखना जरूरी है. शायद हम ऐसा करते हैं, पहला अल्फा का फॉर्मूला देखते हैं फिर Ostwald dilution law देखते हैं, मतलब वो ज्यादा बेटर दिखाती है. So we can say degree of dissociation divided by alpha. तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये पहले देखना पड़ेगा. अल्फा क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी है और उसका फार्मूला भी. फार्मूला देता हूं, फार्मूला ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही फार्मूला है. तो वी कैन से अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. अब देखिएगा, total number of moles dissociated upon total number of moles taken. This is nothing but you can say degree of dissociation. जैसे मैंने बताया कि strong electrolyte dissociate completely. Okay, they dissociate completely, whereas weak electrolyte dissociate partially. Okay, so these are the weak electrolyte and these are the strong electrolyte. Strong electrolyte comprises of strong acid, strong base and salt. Strong electrolyte dissociate completely, weak electrolyte dissociate partially. मतलब इसके अगर हम लोग 100 मोल लेते हैं तो 100 के 100 मोल डिसोसिएट होते हैं. उसके अगर 100 मोल लेते हैं 100 में से 2 मोल डिसोसिएट होते हैं, 3 मोल डिसोसिएट होते हैं, 4 मोल 5 मोल डिसोसिएट होते हैं, बाकी अनडिसोसिएटेड फॉर्मेट में रहते हैं. सो इसका एग्जांपल ऐसा है कि HCl का 1 मोल लेते हैं तो डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ + Cl- कंप्लीट. हमने 1 मोल लिया, 1 का 1 मोल डिसोसिएट होता है. और यहाँ पे मान लो हम लोग एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH डिसोसिएट टू प्रोड्यूस CH3CO- + H+. तो होता क्या ना कि इसका हमने 1 मोल लिया, होता है 0.1 0.2 मोल डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी डिसोसिएट होता है. सो किसी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट होता है और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पार्शियल होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी उसकी डिसोसिएट होती है. उसमें भी
हम एसिडिक एसिड की बात करते हैं तो उसका डिसोसिएशन अलग है, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो उसका डिसोसिएशन अलग है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस का डिसोसिएशन अलग अलग है, ये इसके अंदर की इंपॉर्टेंट बात। तो ये कैसा मेजर करेंगे हम लोग, मतलब किसका कितना डिसोसिएशन हो रहा है, ये कैसे मेजर करेंगे, और वो मेजर करने के लिए लिया जाता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन ऑफ जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा देखिए, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो अल्फा होगा क्या, इसका हमने लिया था मानो 1 मोल और डिसोसिएट हुआ कितना 1 मोल, तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने मोल हमने लिए थे वो सारे के सारे मोल डिसोसिएट होते, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 एंड नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे के सारे मोल डिसोसिएट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Whereas when it comes to the weak electrolyte, that is weak acid, weak base, whatever is that, their degree of dissociation is totally different because total number of moles taken is 1 and the number of moles dissociated is 0.1. तो बहुत कम होगा, 0.1 upon 1 आएगा, तो इसका ये जो आएगा अल्फा that is 0.1 upon 1 आएगा, तो इसका अलग वैल्यू मिलेगा आपको, समझ रहे हैं आप लोग। सो 0.1 उसका वैल्यू है। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे डिफाइन किया जाता है, द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, total number of mole dissociated in aqueous solution at equilibrium. At equilibrium मतलब उनको dissociate होने देना है, और there should be equilibrium. Equilibrium कैसा था कि this is a reversible reaction. Reversible reaction जिसके अंदर there is a forward reaction, there is a reverse reaction. दोनों reaction का रेट सेम होगा, so ना फिर इसका क्वांटिटी बढ़ेगा ना इसका क्वांटिटी बढ़ेगा, दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगे, उसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है। सो इक्विलिब्रियम के टाइम में कितने मोल्स हमने लिए थे और कितने डिसोसिएट हुए, दैट इज नथिंग बट यू कैन से अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। So the number of mole dissociated at equilibrium, especially for the weak electrolyte होता है, the reason behind that strong electrolyte का degree of dissociation 1 ही होता है। So the number of mole dissociated at equilibrium is nothing but called as a degree of dissociation, and this is given by this one. And percentage alpha क्या होगा? Percentage alpha is nothing but alpha into 100. This is called as a percentage alpha. So degree of dissociation is very important unit which is used to calculate the degree of dissociation, and that is mainly used for weak electrolytes because weak electrolyte हमारे लिए मैटर करता है, strong electrolyte का degree of dissociation 1 होता है। Clear? Once we got this degree of dissociation, Oswald dilution law gives the relation between this degree of dissociation for weak electrolyte and its K or Kb. So that is what we will discuss. We'll see it tomorrow. Till then, thank you very much. Hope you will read it tomorrow and you won't be having any doubt, or if you have doubt, please we have interaction tomorrow. Till then, thank you very much. Bye bye.